We have discussed in index analysis that it is a comparison of the current values with the base values. That is, we take some of the values of current years from the financial statements and we compare them with the same values of the base year, and we multiply the answer with 100 in order to convert it to 100 base. And that is the formula for indexing a certain value to 100 base. When we perform financial analysis, it can be done in two ways. One, which is called the vertical analysis, and the other one is called horizontal analysis. In vertical analysis, we look at one financial statement for a given year, यानी 2017, 18 या 19 में से किसी एक साल की स्टेटमेंट हम ले लेंगे, and then we compare every item of the same financial statement with its total or a certain given value. But in case of horizontal analysis, we actually compare the values at different points of time, यानी different years की values को आपस में compare करके और हम analysis perform करते हैं. Index analysis दरअसल एक horizontal analysis है, because in index analysis we compare the current year values with a given base year values, and then we perform our analysis and see that how much change has taken place. The formula for calculating the indexed values of balance sheet is the same as that of profit loss account, which means that we divide every item of balance sheet of the current year with the item of the balance sheet in the base year, and we multiply it by 100 in order to get the indexed value. Let's have a look at this example where we have got two values of stock in trade of a company, which is an item in the balance sheet. So if the current year is 2019 and the base year is 2010, and the inventory or stock in the current year is 400,000 as compared to the base year, which is 450,000. So this is what we'll do. We'll divide the value of stock in trade of the current year with that of base year. So 400,000 divided by 450,000 multiplied by 100 gives us an answer of 88.88, which simply means that almost 11% has been the decrease in the value of inventory. यानी ये इंडेक्स एनालिसिस बड़ी आसानी के साथ हमें ये बता देता है कि हम बेस ईयर के मुकाबले में कितना ज़्यादा या कितना कम इस वक्त वैल्यू रखते हैं. सो जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये तमाम आइटम्स बैलेंस शीट के हैं जिनको कि हम करंट और बेस ईयर में कंपेयर करते हैं. द टोटल एसेट्स इन द बैलेंस शीट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट्स. यानी ये बात स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह मालूम है या होनी चाहिए कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं. दैट मीन्स द टोटल एसेट्स आर इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, and the total investment is a sum of total liabilities and shareholders' equity. Now, let's have a look at a balance sheet which is an original balance sheet and a balance sheet which is indexed. यानी हमारे पास यहाँ पर दो आइटम्स हैं, दो बैलेंस शीट्स हैं. एक वो बैलेंस शीट जो बेस ईयर 2010 की है और एक वो बैलेंस शीट जो करंट ईयर यानी 2019 की है. यहाँ ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जहन में रखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास साल के मुकम्मल होने के बाद आती हैं. यानी अगर हम आज फ़र्ज़ कीजिए 2020 के अंदर मौजूद हैं तो हमारे पास 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, बल्कि हमारे पास 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद होंगे. और इसी तरीके से 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमें एक साल इंतज़ार करना होगा. नाउ इफ़ यू लुक एट दीज वैल्यूज़ एंड दीज वैल्यूज़ आर रिलेटिवली सिंपल, यानी यहाँ पर ये अमाउंट्स बहुत थोड़ी हैं और राउंडेड हैं, तो
तो इसलिए शायद आप ये कहें कि इसको कंपेयर करना आसान है, लेकिन अगर यही अमाउंट्स मिलियंस और बिलियंस के अंदर हो तो इनका कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा. नाउ लेट्स कंपेयर this balance sheet with the indexed balance sheet. Here you can see that the inventory from 100 has gone up to 140, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू में 40% इंक्रीज आ गई है. Similarly, you can see that there is 20% increase in the accounts receivable and there is 25% decrease in the value of bank account, which means that very easily without spending a moment we can find out कि कहाँ पर हमारे किन एसेट्स के अंदर इजाफा हो रहा है और हमारे किन एसेट्स के अंदर कमी हो रही है. एंड दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ दिस index analysis, that we can very easily calculate the change where it has taken place and then we can take remedial actions. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना कि हम इंडेक्स एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद क्या करते हैं. इंडेक्स एनालिसिस इज अ सेट ऑफ कैलकुलेशंस which gives us some values, and then what do we do with these values? We actually take remedial actions. That is it good to have a decrease in the value of our bank account, or is it good to have a 40% increase in the inventory? Are we keeping greater values of inventories with us? क्या ये हमारे बिजनेस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा होगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा होगा? क्या इस वक्त इन्वेंट्रीज को ज्यादा होना जरूरी है? क्या हमारा बिजनेस सेल्स की फॉर्म में 40% से ज्यादा ग्रो कर गया है और हमारी इन्वेंट्रीज को 40% ग्रो करना चाहिए? So these sort of questions are actually answered with the help of this analysis, and we can make decisions on the basis of results, on the basis of this analysis that we perform. So in nutshell, we can conclude that index analysis, where all the values are converted to 100 base and compared with the base year, we can very easily see that how we are trending, whether we are moving forward, and this forward movement is positive or negative.